Dualism and dichotomy. See, dualism and dichotomy is, that is the word thoughts in thoughts part, which we will call them thoughts. Dualism and dichotomy. तो ମୁଁ ବହୁତ ସର୍ଟ ଯିବି and precise ଯିବି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବୁଝେଇଦେବି। ପ୍ରଥମ କଥା dualism କ'ଣ? Dualism, let's say ଆମେ କହୁଛେ nuclear weapon, है ना, or I would say nuke weapon. The nuke weapons, somebody says this one will destroy the whole civilization, ये पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन को ही खत्म कर दो और पूरा ह्यूमन को ही खत्म कर दो. Someone says this will be, we are using for the deterrence, someone says that nuclear get use ami karu parche for the technology use we can also use in the medical science, and we are also using this one is medical science. Someone is saying that nuclear technology, or I would say the power which is being generated through the nuclear, see amar kono energy fulfill karibre. So different people is having different, I would say, views on the particular subject. कौन सी गोटी आम कहवा जमती कि मुझे न्यूक्लियर कथा, तो एमती गोटी न्यूक्लियर टॉपिक को लेकिन बहुत जन डिफरेंट कौन करेंगे तांकर व्यूज दे पारे. Someone says for the medical uses, someone says for the energy, that would be used for the energy, or energy security can be provided or can be ensured. Someone says for the what destruct, that will destroy the human civilization, or someone says this is we are having for the deterrence. So these are the what different views. That means these are the different views. So different views अर्थ कौन, then the whole earth would be divided into certain or सेम टॉपिक ऊपर किसी लोग को डिवाइड हो, किसी लोग को सपोर्ट करेंगे, किसी लोग को सपोर्ट करेंगे नहीं. Like that in geography also, that each and every subject has its own dualism. Dualism ର ଅର୍ଥ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି କି geography ର ଅର୍ଥ to study the physical feature of the earth. Simple, I would say to me, for example, ମୁଁ ସେମିତି ମୋର କିଛି views ନାହିଁ. So to me, geography means the study of physical feature. Physical feature of the earth. Now, geography means is what human, only people study the human. Now, geography means only land study kariba. Now, geography means climate. Au kichi no. That means geography कौन करिबा कथा के geography, what should geography study, and which things we will include into the geography, which would not. There would be different thoughts, or the different views will comes like this. ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭଳିଆ different thoughts and the different views ଆସିଯିବ, that times କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା group of ଲୋକ ଆସିବା division ହେଇଯିବ, है ना. ତ ତା ଦ୍ୱାରା division, ଯେମିତି ଆମେ let's say କୌଣସି ଗୋଟେ family ରେ ଦେଖିବ ଅଲଗା କେମିତି ହୁଅନ୍ତି ଯୋଉ ମାନେ, because of the different views ଆସିଗଲେ ତାପରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହବ, ତାପରେ ଅଲଗା ହେଇଯିବ. So dualism leads to dichotomy. That means the essence is first dualism, first differences ଆସିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବ, ଝଗଡ଼ା ହବ, and a different idea, then they will be depart away, or the there would be finish. ବା ଆମେ କହିବା two parts ରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, convert ହେଇଯିବ. Okay, so ସେମିତି ଗୋଟେ like every subject, ତେଣୁକରି geography ରେ ବି dualism and dichotomy is not an, I would say what exception in geography. ये भी geography रे कौन सी ଗୋଟେ exception नुह, ये सब subject रो अछि dualism dichotomy, and hence the geography also having the dualism dichotomy. So when I say dualism, that is the different views or the dualistic views. When I say dichotomy, that means the branches of geography. Simple branches in geography. तो dualism and dichotomy, hope ये दीटा word meaning बुझा पड़ियो समस्तको everyone, है ना. So dualism is what state of being divide, कौन सी गोटे जिनस उपरे. तो dualism leads to dichotomy. Dichotomy कहले division, कहले branches, है ना. कौन सी गोटे में subject को bifurcate कर देवा different into the different branches, that is dichotomy. When I say dualism, that is the different views on a particular subject. For example, तमे कहबो सर कोन हमें whether we should spend
crores of money in the space sector. For example, let's say କେବେ ଆମେ କ'ଣ ଏ ସ୍ପେସ୍ରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା କି ସେଇ ପଇସା ଆମେ ବଡ଼ରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ହେଲ୍ଥରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ରୋଡ଼ରେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଆସିବ କହିବ କି ନାଇଁ ସେଇଟା ହେବା ଦରକାର, ବିକଜ ଯେହେତୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଦେଶ ହେବା ପାଇଁ ବା ଗୋଟେ ଆଡଭାନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସ୍ପେସ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯେମିତି ୟୁଏସ୍ଏ ବଗେରା କରୁଛି। तो एमती डिफरेंट व्यूज आसला सो दैट व्हाट टू पार्टीज फॉर एग्जांपल अगेन मु कहबी कांग्रेस एंड भाप बीजेपी ना बीजेपी और कांग्रेस दुटा अलग पार्टी कौन पे बिकॉज ऑफ डिफरेंट व्यूज बिकॉज ऑफ डिफरेंट एजेंडा बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्लोगान से तो डिफरेंसेस आसिले डिवीजन हो ये भी सेमती ज्योग्राफी रे डुअलिज्म एंड डाइकोटोमी बट दैट मीन्स आम कह डिफरेंट व्यूज आसिले से व्यूज रू कौन हो डाइकोटोमी आसीबो एंड सब्जेक्ट टा कौन हो डिवीजन हो तो सब्जेक्ट मैटर कौन हो डिवाइड हो whole subject would be divided into different branches. For example, if you ask me, sir, what is the dualism? Dualism kono and dichotomy kono in geography. In geography, dichotomy kole tomoro syllabus itself. Tomor syllabus lekha hai section A of the paper 1. That is the physical part. That is what physical part. That is this is physical geography. And physical those who are physical geographer they are not human geographer. So human geographer section আমি কইবা that is what section B. তাহলে আমি কোন কইছে section B of paper 1. ये कौन human geography itself the different part or the two different branches of geography. ये गोटे geography रो branch ये गोटे geography रो branch. Hope you are getting me. देन आपको भी आम देखा सब डिविजन करुचे आथरे थॉट्स अच्छी आथरे इकोनॉमिक अच्छी आथरे सेटलमेंट अच्छी पॉपुलेशन रीजनल अच्छी so these are also what different branches there are what branches of geography and the physics अच्छी let's say metaphysics है कि हमें cosmology the different branches अच्छी now hope you are getting me so what is dualism dichotomy समस्त को बुझा पड़ जिवो everyone कौन हैला किसी बुझा पड़ो ना बुझा पड़ो नहीं है ना concept clear पूरा dualism कौन dichotomy कौन so that means every subject has its own dualism and dichotomy now question जदि मु गोटे पचारि कि why should we have dualism and dichotomy in a subject or the subject should be monotonous कौन do you feel that dualism and dichotomy should be there कौन से गोटे subject रे बा disciplines रे for the geography is a school of or let's say as a discipline I would say so should we have कौन कहूच तमें कौन आपको दरकार एटा बिल्कुल दरकार dualism dichotomy must be there हमें कहबा must be तो कौन पे सर because that will enrich your subject तो सब्जेक्ट को एनरिच करिवो जेमति आमे गोटे गुड डिसीजन केते बेले नौ जेतने डिबेट करू कि कहबो सपोर्ट रे कि अगेंस्ट जीवो जेमति है ना तापर आमे गोटे गुड डिसीजन नौ सो डुअलिज्म एंड डाइकोटोमी जेतले कोनसी सब्जेक्ट रे डिबेट होची डिफरेंट व्यूज होची दैट विल एनरिच दैट सब्जेक्ट होप तो बुझा पड़ी जो and that subject would be more dynamic as well subject dynamic ହେଇଯିବ subject would be progressive नहीं परिबनी that would be progressive as well subject रे जेते dualistic views आसीबो जेते dichotomy तमर आसीबो that will lead to the what progressiveness of that particular subject for example मु कहूची QR phase कथा नहीं जो then we moved into a different phase that is the critical phase in geography in 1980s in 1980s geography entered into a difficult phase that is the critical phase and before this it was a dark phase so geography is having different phases like dark phase and a progressive phase and also I would say that is the critical phase so different phases they change and each phases the geography as a subject disciplines has seen many advocates of the different fields the many geographers who claimed and their ideas from time to time जब तेणु करके ये सब्जेक्ट मैटर को डायनामिक करेबो सब्जेक्ट को एनरिच करेबो सब्जेक्ट को प्रोग्रेसिव करेबो है ना एंड मोर वायबल एज वेल टू द सोशल लाइफ एज वेल दैट मींस जो सब्जेक्ट मैटर भाव ज्योग्राफी आमे कहबा जदी ए जो तमर क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन पूर्व ज्योग्राफी ते मॉडल्स नथला थ्योरीज नथला जोटा सोसाइटी रे यूज हे परिबो नाउ वी आर हैविंग मॉडल्स और थ्योरीज इन फॉर्म ऑफ तमे से कहि परियो सेंट्रल प्लेस थ्योरी कहि परियो कि तमे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन बा लोकेशनल एनालिसिस द्वारा वेदर कथा नहीं परियो कि तमे कहि परिबो बेटलसिकल क्लासिफिकेशन यूएसए
You may say the Van Thunen model, Smith model, Loss model. These are the different that means more relevance to the society. So this could be the answer. The answer would be that will what enrich the subject, that will make the subject more dynamic, that would make the subject more progressive and social, I would say, but that will also make relevant subject matter would be more relevant, and subject would be more competitive as well. Like you can say also subject would be more competitive. So this would be need, that is कौन से subject ना dualism dichotomy रहिबा बहुत ही ज़्यादा जरूरी, so that that subject would be enriched and overall that will subject will grow. And okay, hope you are getting me. So that was the need I'm saying why dualism dichotomy should it be or it should not be. Yes, we will have some sort of friction, some sort of differences, but that differences as in he better. Move on a better person will come because I need some good critic. Those will criticize me and I will improve in the course of the time. So okay, so like this. So that means it would be more progress. किसी critic भी ऐसी पे geography रे, and that will improve the subject. Subject को कौन करिबो improve करिबो. तेणु करी हम कहवा dualism and dichotomy ought to be there, and that will make the subject more healthier. When it now comes to the history of the background of dualism and dichotomy, ये तो मैं तुमको concept बुझाई देल कि dualism कौन dichotomy कौन. देखो dualism dichotomy बहुत आगे रोची geography रे, है ना. चाहे से हिकाटियस कथा नहीं जो हेरोडोटस अरिस्टोटल समस्त अछंती हम देखिबा आगको ना डुअलिज्म मु तुमको बुझाई देली कि डुअलिस्टिक हॉलमार्क्स थाए, डायकोटोमी तुमको डिफरेंसेस थाए टू आइडियाज रो, है ना. ये थिला हमर डुअलिज्म डायकोटोमी. ना हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखिबा डुअलिज्म डायकोटोमी. सो जदि हम देखिबा राइट फ्रॉम द वेरिनियस, ना जदि वेरिनियस कथा हम देखिबा इज द फर्स्ट पर्सन to divide the subset Varenius. Now ये जो लोग थे, एक मिनट. Now Varenius is the person who talk about the first, that is the dichotomy in geography. जे geography रे में देखिबा ये प्रथम लोग जे कि dichotomy कथा कहथले, है ना. बर्नहार्ड वेरेनियस तांकर फुल ना होची कोन बर्नहार्ड वेरेनियस, ये जर्मन जियोग्राफर, है ना. बर्नहार्ड वेरेन बा वेरेनियस ताको कुआ जाय, है ना. जर्मन रहितले आ तांकर जियोग्राफी रे में कहबा दैट इज ना जर्मन जियोग्राफर्स. ये होची अंक नाम छी बर्नहार्ड बर्नहार्ड, है ना. देखो आंकर होल जियोग्राफी जदि हम देखिबा आंकर जो कंट्रीब्यूशन रही आंकर कंट्रीब्यूशन रे जदि हम देखिबा कि ये जियोग्राफी को बहुत स्टडी करछि यूरोप रे बहुत स्टडी करछि जियोग्राफी को. देन जियोग्राफी को से कोन कले टू ब्रांचेस रे डिवाइड कले. गोटे हला जनरलाइज स्टडी ऑफ द माउंटेन्स प्लेन्स एंड द पैटिक एंड द स्पेशल जियोग्राफी. सो ये होची प्रथम लोक जे जियोग्राफी रे डाइकोटोमी आनिथिले. वेरी इंपोर्टेंट, एज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग द डाइकोटोमी इन जियोग्राफी, है ना, बर्नहार्ड. ये दैट मीन्स आंकर डाइकोटोमी टिके देखि दे. डाइकोटोमी होची जनरल versus particular. Simple, I would say it would be general versus particular geography, है ना. तो आंकर एते आइडिया आसिला कोडू. दिस पर्सन गॉट द आइडिया फ्रॉम द ड्यू टू द रेनेसा. रेनेसा कथा तो समस्त जानछे 15th सेंचुरी रेनेसा, है ना. तो ये होची प्रथम लोक जे जियोग्राफी को दुईटा ब्रांचेस रे डिवाइड करछे. मु तुमको कहथि कि डाइकोटोमी रो अर्थ कोन ब्रांचेस. So that is the Bernhard Varenius is the first person who divided the geography into two different branches, that is the general geography and special geography, or the special geography also called as the particular geography, or you must say the regional geography. Different word use करा जाता है.
है ना। तो एबे जदि आमे देखिबा ताले कांट वाज गिवन मोर स्ट्रेस टू द स्पेशियल ज्योग्राफी देन तमर कांट आसीबो द ग्रीक फिलोसोफर्स कथा आमे कहबा सॉरी इमानुएल कांट है ना। तो कांट ये कहले तमरो जो कोन ये जो तमरो हम जे देखबा जो मैक्सिमम फोकस कले से कोन तमरो जो कि हम कह पर्टिकुलर ज्योग्राफी और स्पेशल ज्योग्राफी से आम जो पढ़ुले कौन पढ़ुले एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी है ना। एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी और एरियल डिफरेंशिएशन तो रिचर्ड हार्टशोन है ना the founder of that school that is the aerial differentiation was also the follower of Kant और Kant philosophy ର follower ଥିଲେ जी की ज्योग्राफी को बहुत सारा ब्रांचेस रे डिवाइड करते लाइक मैथमेटिकल ज्योग्राफी मोरल ज्योग्राफी पॉलिटिकल ज्योग्राफी कमर्शियल ज्योग्राफी एंड टेलियोलॉजिकल ज्योग्राफी सो दीज आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी अकॉर्डिंग टू कांट। तो कांट जदि हम कहबा ये लोक ज्योग्राफी रो कंट्रीब्यूशन कोन एंड आको कहा जे एक्सेप्शन इन ज्योग्राफी बा एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी बाय दिस पर्सन ये लोग ही एक्सेप्शनलिज्म आनी थे और आई वुड से एरियल डिफरेंशिएशन एरियल डिफरेंशिएशन को प्रमोट करे थे इमानुएल कांट दैट मीन्स साइंटिफिक अप्रोच है ज्योग्राफी आनी थे है ना। ज्योग्राफी साइंटिफिक अप्रोच को आनी थे से जमती कि न्यूटन्स रो लॉ ये समस्त लॉ को से यूज करते ज्योग्राफी को ज्योग्राफी आम कहवा ये सब यूज करते देन कांट रो हमें कहबा जो स्पेशल ज्योग्राफी बा लोकेशनल सेक्टर तो लोकेशनल एनालिसिस मु तो कहबी पर्टिकुलर ज्योग्राफी मु कहबी तो ये कहले देन आसीबो राइज विथ द राइज ऑफ हम्बोल्ट एंड रिटर कार्ल रिटर एंड हम्बोल्ट क्लियर डिवीजन ऑफ मेथोडोलॉजी इन ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी को एमाने भी आउरी टिके हेल्प कले ज्योग्राफी को सिस्टमैटिक जेमती हम्बोल्ट प्रमोट द सिस्टमैटिक अप्रोच इन ज्योग्राफी एंड रिटर प्रमोट द रीजनल अप्रोच इन ज्योग्राफी systematic approach in geography or the general geography आम ताको कहि परिबा general geography and Ritter कौन कहते regional geography that means again dualism and dichotomy so these peoples they are having or they have also contributed into the school of different dualism and dichotomy for example देखो Radzel views was completely different from the general geography of Humboldt though Radzel was also है ना मॉडर्न डे फादर को आज रैडजल को ह्यूमन ज्योग्राफी रो दो ही वाज आल्सो एडवोकेटर ऑफ जनरल ज्योग्राफी लाइक द हम्बोल्ट किंतु हम्बोल्ट रो अप्रोच और तार अप्रोच डिफरेंट था हम्बोल्ट वाज वन स्टेप अहेड बाय सेइंग द फिजिकल ज्योग्राफी was the general geography and this is that is why I was talking about that general geography और हम्बोल्ट रो जो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी को हमें जनरल ज्योग्राफी को ताको भी हमें कौन को फिजिकल ज्योग्राफी दैट मींस फिजिकल ज्योग्राफी इक्वल टू जनरल ज्योग्राफी ये गोटे पार्टिकुलर ज्योग्राफी कहले कोन हमें पार्टिकुलर जिंस को स्टडी करबा है ना ताको जेमति कि हमें कहते माउंटेन ऑफ इंडिया सेतर पार्टिकुलर नहीं जदि मु कहबे ओनली ईस्टर्न घाट ताले पार्टिकुलर है जोठी सो लाइक दिस ज्योग्राफी रे माने कंट्रीब्यूट कले फ्रॉम टाइम टू टाइम आसीबो एंड सो दैट कि ज्योग्राफी देन आउरी देखबा हमें देन एक मिनट रैडजेल रैडजेल हमें देखबा फर्दर हमें केबा प्रमोटेड द न्यू ब्रांचेस इन ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी ये लोग कौन कले ह्यूमन ज्योग्राफी आनले जहाँ हमें वर्तमान पढ़ुचे सो द न्यू डाइकोटोमी वाज स्टार्टेड ह्यूमन ज्योग्राफी है ना हमें पढ़िले ताले कोन तो फिजिकल एंड ह्यूमन दीटा अलग अलग ही गला है ना दैट मींस हमें कहबो एनवायरमेंटलिज्म पॉसिबिलिज्म ये भी अलग अलग ही गला ये भी दीटा ब्रांच है डाइकोटोमी दिस इज आल्सो डाइकोटोमी ना फ्रिंज ज्योग्राफी पॉसिबिलिज्म आसेला तो एमती भी धीरे 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 डाइकोटोमी इज इंक्रीजिंग इन ज्योग्राफी नाउ द डाइकोटोमी यू कैन सी लाइक तुम देखो हम्बोल्ट डिवाइड कर देले geomorphology, climatology, oceanography, biogeography. These are the parts division by Humboldt. Okay.
देन विडाल विडाल प्लासे ये कौन कले ह्यूमन ज्योग्राफी को भाग कले देख पॉसिबिलिज्म ये सब ये तरह भाग कले तो एमती ब्रांचेस डिफरेंट लोक आम कह ज्योग्राफी रे डिफरेंट जिनस को इंडक्ट करैछंती और आम ब्रांचेस रे कन्वर्ट करैछंती तापर आम देखिबा एबे नाउ द रियल आम कह क्लासिफिकेशन द रियल क्लासिफिकेशन लाइक सिस्टमैटिक वर्सेस रीजनल physical versus human environmentalism versus possibilism so these are what these are the dichotomy or I would say what branches that is what dichotomy in geography तो ये जहाँ तुम ये कौन डायरेक्ट गोटे क्वेश्चन पचार देव कि डिस्कस द एनवायरमेंटलिज्म एंड पॉसिबिलिज्म ये गोटे क्वेश्चन 30 मार्क्स हो पारिबो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी वर्सेस रीजनल ज्योग्राफी 30 मार्क्स हो पारो बाकी जदी खाली तुमको कह जबो कि डाइकोटोमी एंड डुअलिज्म ज्योग्राफी दैट वुड बी 60 मार्क्स बिकॉज़ ये सब जिंस आसीबो ये गोटे गोटे को तुमको पढ़िया पड़िबो आगो को पढ़िबा है ना तो ये डुअलिज्म डाइकोटोमी रे हम देखबा नाउ different branches is coming systematic versus regional or the systematic itself we call it general geography also we call it general geography आपको हमको general geography this is also called as the general geography है ना now that means एबे हमें कि होगा dualism dichotomy धीरे 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 मैच्योर है ही जाउची ज्योग्राफी रे पर नंबर ऑफ जेमति तोर क्रिटिकल रेवोल्यूशन हो तो कहली ज्योग्राफी रे आसीबो फर्दर क्रिटिकल रेवोल्यूशन आसीबो आउ थे ज्योग्राफी रे कोन होबो नुवा ब्रांचेस सब आठ ही जो नाउ द टाइप ऑफ डाइकोटोमी एंड डुअलिज्म हियर द सिक्स टाइप ऑफ डुअलिज्म डाइकोटोमी धीरे धीरे वैल्यू एडिशन है कि सब्जेक्ट रे वर्तमान जनरल ज्योग्राफी वर्सेस spatial, systematic versus regional, physical versus human, determinism versus possibilism, theoretical geography versus applied geography, ideography versus nomothetics. So these are the dichotomy you have to write in 60 marks answer. ये गोटे गोटे को पुणी एक्सप्लेन करा फर्दर ना बुझा पड़न खाकू जो 60 मार्क आसे मार्क कम मिलवार कारण होची कि आम ये सबू जाक को एक्सप्लेन करू ना आम गोटे दुटा एक्सप्लेन कर दो पर तुमको ये 6टा को एक्सप्लेन करियर अछि जे कोन देन आम जानि परबो ताले तमर 60 मार्क्स इजीली हो जबो आगे हम बैकग्राउंड देखबा केमसे डेवलप होला इंट्रोडक्शन देलो देन हु वर द कंट्रीब्यूटर्स उनके कंट्रीब्यूट की कोठी करिछि तापरे सो डिफरेंट पार्ट्स को लेट्स से मु कहबी आज मु तुमको फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी कहि दउछि एठी कहि दउछि अच्छा फिजिकल वर्सेस ह्यूमन जदि मु एठी को लेट्स से दिस साइड आई वुड से फिजिकल दिस साइड वुड बी ह्यूमन ना ह्यूमन ज्योग्राफी रे हम पॉपुलेशन पढुछे ह्यूमन ज्योग्राफी रे हम सेटलमेंट पढुछे ह्यूमन ज्योग्राफी रे हम कोन पढुछे हम एनवायरनमेंट हम ह्यूमन एनवायरनमेंट भी हम कहि परिबा सो ह्यूमन ज्योग्राफी रे हम ह्यूमन बिहेवियर कथा पढुछे पोवर्टी कथा पढुछे these are the things coming into the human geography but when we say physical geography we are learning what climatology oceanography geomorphology है ना environment that is the what environmentalism कोनी environment these things coming under the physical geography तो physical geography that means हम कहबा त physical geography रे हम climate पढिबा temperature pressure ए तमरो tropical cyclone हे गेला कि ओशन रो तमे बॉटम फीचर कथा नै जो हम जेते मैपिंग करूचे ए को पार्ट रे आसुची फिजिकल पार्ट रे सिबो जेते माउंटेन पढुचे अर्थक्वेक पढुचे साइक्लोन पढुचे salinity density temperature pressure all are the what coming under the physical geography ताले फिजिकल ज्योग्राफर माने जदि मु गोटी गोटे कहबी सिंपल ना फिजिकल ज्योग्राफी वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी इज द डुअलिज्म एंड डाइकोटोमी इन ज्योग्राफी ये आजिरो नहीं ये बहुत पुराना हिस्ट्री अछि बा ज्योग्राफी रे कि रोमान टाइम रु एंशिएंट टाइम रु ग्रीक टाइम रु ये डिवीजन अछि किछि लोक ह्यूमन ज्योग्राफी को प्रमोट करंती किछि लोक फिजिकल ज्योग्राफी मु जेमति कहबी डेविस कथा नै जो डेविस जने फिजिकल ज्योग्राफर मु कहबी लेट्स से ऑथर होल्म कथा नै जो ऑथर होल्म कथा नहीं जो फिजिकल ज्योग्राफर लेट्स से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्री अल्फ्रेड वेगनर फिजिकल ज्योग्राफर सो दे आर द एडवोकेटर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफर लेट्स से तुम कहबो सर क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन कोपेन थॉर्न वेट्स ये सब कोन ताले ए माने भी क्लाइमेटिक जे माने भी क्लाइमेट ऊपर काम करछंती द क्लाइमेट इज कमिंग अंडर द फिजिकल ज्योग्राफी दैट मींस दे आर आल्सो द फिजिकल ज्योग्राफर बस एमती ना लिखियार अछि हमको गोटे पर गोटे तांगर कंट्रीब्यूशन ना प्रथम फिजिकल ज्योग्राफी कोन कि को पार्ट को ना फिजिकल ज्योग्राफी stress or focuses the physical part of the earth. The physical part of the earth, when I say physical part of the earth,
that is the temperature, climate, soil, amoko tamoko jaha hochi tomar, that would be the physical part. For example, let's say आउ कहीं किसी को ही परिवो कि physical geographer आउ की ही परिवो है ना, let's say हम कहीं plate tectonic है ना, let's say हम कहीं continental drift theory, let's say हम कहीं Mackenzie air Parker sea flow spread को हम कहीं परिवो है ना, आउ कौन कहीं परिवो हम को कि बर्जन थ्योरी कथा आम कहीपर क्लाइमेट रेस बर्जन थ्योरी कि ट्राइसेलुलर मॉडल कथा कह फेरल सेल हार्डले सेल दिस आर जो मैंने फेरल कथा तो लिखिपर ना हार्डले कथा तो लिखिपर जो पोलार तो छाड़ ये दुई जन तो कंट्रीब्यूट कर ना ताको आम कहीपर लेट्स से आम मॉनसून थ्योरी जो मैंने रिचार्ड आम कह हार्ले कथा नहीं जाओ सार एडमंड हार्ले रिचार्ड तो नो सार एडमंड हार्ले कथा नहीं जाओ सो दे आर व्हाट सपोर्टर ऑफ फिजिकल जियोग्राफर किछि एबे ह्यूमन जियोग्राफर को आसीबा जेमति हमें कि ह्यूमन जियोग्राफर लेट्स से मु कभी कांट लेट्स से हमें अच्छा फिजिकल जियोग्राफर हमबोल्ट भी आसीबो तमरो हमबोल्ट भी आसीबो फिजिकल जियोग्राफर आउट के पूर्व तो केतले लेट्स से मु कभी भारेनियस ह्यूमन जियोग्राफर अच्छा मु एबे कभी दैट इज रिचार्ड हार्टसोन ह्यूमन जियोग्राफर तो ह्यूमन जियोग्राफर ए माने होचंती ह्यूमन तम कह जीफ ह्यूमन जियोग्राफर जे के जीफ और तुम कह सर थॉमसन ह्यूमन जियोग्राफर तो दे टॉक अबाउट द ह्यूमन पार्ट्स सो ह्यूमन जियोग्राफर जो मैंने ह्यूमन जियोग्राफर दे फोकस द ह्यूमन पार्ट लाइक ह्यूमन सेटलमेंट ह्यूमन बिहेवियर ह्यूमन पॉपुलेशन अमको तमको जिते माइग्रेशन थ्योरी फेगुरी जहाँ जे ऑल आर कमिंग अंडर द ह्यूमन जियोग्राफर अच्छा समरी बुझा पड़ो समस्त को ना बुझा पड़ोनी ह्यूमन जियोग्राफी वर्सेस फिजिकल जियोग्राफी केमती आम डिवाइड करूचे नहीं परिबनी कौन है कौन कहते आगे what is physical geography and what is human geography then what they advocate या मैंने कौन advocate करे सेमानकर किछि नेम लिखिबो and contribution नेम and contribution एपटे भी सेमती तमरो प्रथम तो आगे लिखिबा ना कि physical geography is a dualism and dichotomy in geography which talks about or studies the physical parts of the earth let's say जेमती कोचे आम कहे रिजनालिजम कथा नहीं जो एरियल डिफरेंशिएशन कथा नहीं जो एरियल डिफरेंशिएशन हम क्या स्टडी करूचे एरिया को स्टडी करूचे है ना तो एरिया ताले हम कहबा मु कहबी गोटे रीजन आ गोटे रीजन मु कहबी पॉपुलेशन कथा ले जो पॉपुलेशन तुम एपट को नेसो कि पॉपुलेशन एंड ह्यूमन द्वारा जहा होची बा ह्यूमन रिलेटेड एवरीथिंग चाहे से तमे अर्बन स्प्रॉल कथा नहीं जो अच्छा अर्बन स्प्रॉल कथा तो मु कहबी केना सेटा तुम फिजिकल पार्ट रहियो फिजिकल पार्ट है ह्यूमन बिहेवियर कथा नहीं जाओ बिहेवियरलिज्म ये सब आसीजो बस किसी ना लिखा पड़े तुमको एंड सेमन को कंट्रीब्यूशन लिखा पड़े फॉर एग्जांपल मु देखो जे द फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ग्रीक्स वे द probably the first who started the branching the discipline है ना এই ভলিয়া ভাগ কিয়ে কলে গ্রিক্স কিয়ে হেকাটিয়াস স্ট্রাবো আলবুরিনি এমানে এমতি ভাগ কলে है ना भाग गला पर कौन कर देखिया तो डुअलिज्म ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी स्टिल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिसिप्लिन ए डिसिप्लिन रे अछि वारेनियस कथा मु कहितली जे कि प्रथम ह्यूमन जियोग्राफी फिजिकल जियोग्राफी तांको कहितली से जन ह्यूमन जियोग्राफर बोली सेमति तमे हम्बोल्ट कथा आउट के पूर्व हम डिस्कस करथले हम्बोल्ट फिजिकल जियोग्राफर रिटर हम कहबा ह्यूमन है ना तो एमति डिफरेंट ना लिखिबो से मानकर कंट्रीब्यूशन लिखि लिखि जिवो हम बुझा पड़बन केमति लिखाबो एबे है ना गोटे गोटे ना एमति रैडजिल कथा ह्यूमन जियोग्राफर ठीक है तो एमती तुमको लिखि लिखि जीवा पड़े से कंट्रीब्यूशन बस तापर ये तुमको एत डिटेल रे जीवा पड़ोनी कि अमेरिकन स्कूल रे किए थे फिजिकल जियोग्राफर से डाविस थे कि नहीं पेंग कहते जमी ये तुम लिखा डाविस कथा नहीं जाओ थॉर्नबेरी कथा नहीं जाओ एत डिटेल रे जाकि कि अमेरिकन स्कूल ऑफ जियोग्राफी लिख एमती क्वेश्चन आसो ना आसले बहुत डिफिकल्ट हो कारण ताल थॉट को तुमको पढ़ाई मत लगे 10 दिन क्या मत पुणी अमेरिकन स्कूल पढ़ी
फ्रेंच स्कूल पढ़ेबी, ब्रिटिश स्कूल पढ़ेबी, ग्रीक स्कूल पढ़ेबी, अरब स्कूल पढ़ेबी, इंडियन स्कूल पढ़ेबी, ये तो हो पारिबनी, संभव नुह बर्तमान है ना। तेणु ये दिखाई माने टिके जार इच्छा थो जोग्राफी आउ किसी जाने एक्सट्रा तुम से कर जमी मुझे डेविस कथा मुझे इजिली कहूँ लेट्स से थंडवर्ड्स कथा क्लाइमेट कथा कही ओबियसली फिजिकल जोग्राफी जीव जदि से अमेरिकान से अमेरिकान स्कूल आसीगले डेविस अमेरिकान अमेरिकान स्कूल आसीगले बुझीपार तो एमती डिफरेंट एमती सब करा ब्रिटिश स्कूल ये देखी दियो थॉमस ग्रिफिथ जे कि कहते चेक एंड गो स्टॉप एंड गो रो प्रिंसिपल है ना बुझीपार ये थॉमस ग्रिफिथ कथा पढ़ा हार्वर्ड सन दे आर द स्मार्ट ये मैंने सब मैकिंडर ये मैंने सब आसी तुम ब्रिटिश सेमती होप एवं बुझीपार फिजिकल जोग्राफी एंड ह्यूमन जोग्राफी कहले कौन लिखा पड़ो बस आमको से कंट्रीब्यूशन ऑफ फिजिकल जोग्राफी मीनिंग कौन है ना ह्यूमन जोग्राफी मीनिंग कौन बस गोटे पर गोटे लिखी लिखी जीव तुम हो सेमती भाव गोटे ये गोटे एमती आप एत बेसी लिखा ना ताकि कहना तुमको बहुत सारा लिखा पड़ो फॉर एग्जांपल जनरल वर्सेस फिजिकल आम गोटे ब्रांच को देखुचे ना किंतु आमर बाकी भी तो अच्छे लेट्स से मुझे कहि जनरल जोग्राफी वर्सेस स्पेशल जोग्राफी आपको भी सेमती डिस्कस करिवो तार कंट्रीब्यूटर किए कंट्रीब्यूट करिछि जनरल जोग्राफी कहले काको बुझाय आगे ताको एक्सप्लेन करिवो स्पेशल जोग्राफी कहले कोन ताको बुझाय जेमति कि जनरल जोग्राफी हैला मु कहबी स्टडी ऑफ माउंटेन्स हैला जोग्राफी बट स्टडी ऑफ हिमालय इज स्पेशल जोग्राफी ना बुझे पड़बनी स्टडी ऑफ हिमालय होची स्पेशल जोग्राफी बट स्टडी ऑफ ऑल माउंटेन इज जनरल जोग्राफी जनरलाइज कर दवा हां कि नहीं तो ये रीजनल जोग्राफी आम जहाँ कहवा स्पेशल जिन को एरियल डिफरेंशिएशन जहाँ आम कहे बुझीपार एंड दैट इज द बट सिंथेसिस एज वेल या भी अच्छी तुम जनरल जोग्राफी किए कंट्रीब्यूट कर ना लिखा पड़ो ना डायरेक्शन तो बुझीपार केमती आंसर हो पार एवरीवन तापर आम देखा कौन ना डिटरमिनिज्म डुअलिज्म एठी पुणी डिबेट देखा पड़ो आर पुणी डिटरमिनिज्म को मैंने एडवोकेट करोचे डिटरमिनिज्म कौन डुअलिज्म कौन है ना तो सॉरी पॉसिबिलिज्म कौन एटा जो आसे कि डिटरमिनिज्म डुअलिज्म आम से मैन एनवायरनमेंट रिलेशन को लेकिन जानी था कि डिटरमिनिज्म एंड डुअलिज्म कौन तो मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशन यदि आम कहवा सो मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशन रे आम पढ़ू डिटरमिनिज्म डुअलिज्म मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशन आज कथा ना जोग्राफी रे ये बहुत एंशिएंट टाइम रो होइके आसुची मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशन जोग्राफी and the geography will be divided into determinism and possibilism ये मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशन ताकू देखी देबो ओल्ड वीडियो जो बहुत बढ़िया से बुझाई देछि है ना मु गोटे जिंस डिटरमिनिज्म अर्थ नेचर विल डिटरमाइन व्हाट यू डू जो माने कहंती जो माने भाव दी प्रकार लोक थिबो जने कहबे ना ना ह्यूमन ही सब किछि करूची जने कहबे ना ना क्लाइमेट ही सब किछि करूची आज शीत दिन आसीची तमे शीत वस्त्र पिंधुचो है ना यू आर वेयरिंग ऑल द जैकेट्स एंड ब्लेजर्स लेट्स से और द स्वेटर्स व्हाई because environment is forcing you to wear that kind of clothes. When it comes to the summer season, you will definitely go for the light color and but cotton t-shirt or the shirt. That would be environment. That means environment is determining what I will do. ताको कहा जाए determinism. So ये कोथरे इसको man and environment relation के environment determine करूची एटा करंतु सेटा हमें कहले environment कोची गैंगेटिक प्लेन रे एया हबो सेतिपे हम एई खेती करूचे के देखो एठी पहाड़ अछि एठी टी कल्टीवेशन करो तो एनवायरनमेंट अनुसार मनीष कोन करूची इकोनॉमिक एक्टिविटीज करूची तेणु करी डिटरमिनिज्म डुअलिज्म जेतले हम पढू which is itself the dualism and dichotomy in geography there would be debate would be on the basis of man and environment relation तो man and environment relation ऊपर हम कोन करू डिबेट करू है ना सेतरा से किसी लोग कहबे ना ना एमती हुए नहीं क्लाइमेट जदि तुमको लगुच जदि नेचर ही सब किसी करूची ताले तो आम पैसिफिक ओशन पारी ही पारि न थांते कहीं जीवन रे पारी हेले केमती बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी कारण तुम ह्यूमन नॉलेज को अंडर एस्टिमेट कर परिबो नाही तो मैन एमती हम कोन डिटरमिनिज्म कहते मैन होची पैसिव एजेंट पॉसिबिलिज्म को मैन होची एक्टिव एजेंट सो लाइक दिस यार टिके वीडियोस अच्छी देखी देबो इवनिंग रे आउट के डिस्कस करबी जोटा तमरो जनरल ज्योग्राफी आउट के डिस्कस करबी डिटरमिनिज्म डायकोटोमी पढ़ेबी एंड इडियोग्राफिक नोमोथेटिक पढ़ेबी ये तुम्हारे इवनिंग रे आज खत्म हो जिवो ओके तो इवनिंग रे मु तुम